सो हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम बात करेंगे जो कास्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट व्हाट आर द चेंजेस दैट वी सी इन कास्ट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशंस. सो मोस्टली कास्ट बेस्ड जितने भी पीवाईक्यूज हैं, द कॉमन थीम दैट इज कि what are the static dimensions of caste and how caste is dynamic. This is one of the broader dimension in which most of the question that is being asked related to caste system that can be classified. So what we need to understand that is that कभी भी अगर change की बात की जाए, that what are the changes that we are noticing in the caste system. So we need to understand the idea of caste. So nothing better can be than one of the approach 6 feature of caste that has been given by GS Ghurye. That is the sixth feature. He defined sixth feature like caste is an institution based on segmental division, based on hierarchical division, involves restriction on feeding and social interactions, rules governed by purity and pollution, involves differential rights and duties, civil and religious disabilities and privileges, restrict the choice of occupation, heredity, caste endogamy and restriction on marriage. These are the 6 features that has been defined by him. हम इसी फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हैं अगर कास्ट एज ए इंस्टीट्यूशन में चेंजेस पूछे जाते हैं. वो कोई भी फोर्सेस ऑफ चेंज दे सकते हैं, लाइक अर्बनाइजेशन कैन बी वन फोर्स ऑफ चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कैन बी वन ऑफ द फोर्सेस ऑफ चेंज. उस पर्सपेक्टिव में वो क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इस पर्सपेक्टिव में बताइए कि अर्बनाइजेशन से क्या इंपैक्ट हुआ है कास्ट सिस्टम पर. अगर हमारे पास ये फ्रेमवर्क रेडी है दैट हाउ कास्ट इज एक्चुअली डिफाइंड बाय सोशियोलॉजिस्ट, तो हम आंसर भी कर सकते हैं. लाइक अर्बनाइजेशन के बाद सेगमेंटल डिवीजन पे क्या इंपैक्ट हुआ, हेरार्किकल डिवीजन पे क्या इंपैक्ट हुआ, क्या फीडिंग पे रिस्ट्रिक्शन थी, सोशल इंटरेक्शन पे जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो रिस्ट्रिक्शंस कम हुई या नहीं, जो प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का जो प्रिंसिपल था वो डिमिनिश हुआ या नहीं. अगला डायमेंशन इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल राइट्स एंड ड्यूटीज, सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी एंड प्रिविलेज. तो कास्ट के बेसिस पे जो डिसेबिलिटीज और प्रिविलेजेस असाइन होते थे, राइट्स एंड ड्यूटीज असाइन होती थी, उनमें क्या क्या चेंजेस नोटिस किए गए. फिफ्थ, रिस्ट्रिक्ट द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन. क्या चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन जो रिस्ट्रिक्टेड थी वो उस पर्टिकुलर फोर्स ऑफ चेंज के बाद चेंज हुआ या नहीं. हेरिडिटरी, क्या जो हेरिडिटी का एस्पेक्ट था वो चेंज हुआ या नहीं. कास्ट एंडोगमी एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज जो एक प्रोमिनेंट फीचर है कास्ट सिस्टम का, क्या इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. तो ये फ्रेमवर्क अगर रेडी है देन वी विल बी एबल टू इजिली जनरेट अराउंड 10 से 12 पॉइंट्स. 10 से 12 पॉइंट्स इजिली जनरेट कर सकते हैं सिर्फ इस फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए. नाउ द सेकेंड अप्रोच or the second part of the question, that how to introduce or conclude the answer. For introduction we can use this particular quote that is caste is dynamic institution or not a static one, क्योंकि mostly questions भी इसी theme में आ रहे हैं कि it is not a static institution, it is a very dynamic institution. इस particular dimension में introduce कर सकते हैं. For the purpose of conclusion we can use the aspect of annihilation of caste of Dr. Baba Saheb Ambedkar, or we can talk about the India's destiny not cast in stone. This was one of the editorial that was written by prominent sociologist Andre Beteille. So we can use this particular thing for a conclusion also. Anyone we can use, and afterwards certain keywords that are necessary to write caste based question is that aspect of secularization of caste, the idea of dominant caste, the idea of sanskritization and re-sanskritization of caste. We have studied each of these ideas in our society syllabus. So the thing is that we should be able to bring these keywords in our answer as well. So this is the broader idea of providing certain kind of templates, etc. For writing every answer.